हेलो गाइस, वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल तो नहीं, मगर काफी जो टॉपिक बार बार आता है, एंड दैट इज बेसिकली ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड इन मिडफील्ड। तेरे को पता है ऋत्विक, एक वीडियो ऐसा नहीं जाता है कैन वी ट्राई ट्रेंट इन मिडफील्ड, कैन वी ट्राई ट्रेंट इन मिडफील्ड। उस पे मैं क्या सोचता हूँ, मैं तो बहुत बार बता चुका हूँ, बट आई कम स्ट्रेट टू यू ब्रो। डू यू थिंक इट कैन वर्क? It's a long shot, but it could work, but it needs a lot of change in our system. वही answer है अभी. Like the answer is that for like the situation. What's the change in the system that you're talking? हाँ, could So you I elaborate? mean, because like we play a 4-3-3 basically, and I think the only place where he really suits right now is the like the attacking 8 in our system. So he will be involved in that half space a lot, and that role actually involves a lot of tracking back and covering up for our fullback, which is Trent himself. So unless we change the way we attack, so we rely a lot on our fullbacks creating, like you can even see Robertson like underlapping quite often these days with Diaz, uh, like hugging the touchline. So Yeah. so I think we need a change in style, like a lot of change, I guess. So I don't think there's any evidence of us moving in that direction at the moment. Lekin I feel he can work, but given limited defensive duties to an extent, because his the biggest issue for him defensively is his awareness, and he does not have any bit of that. Like that's where Vinicius last season, his season beat 2-3 goals like Mitrovic and others. The lack of defensive awareness for a fullback is a huge issue. So वो है उसके game में, but he is quite good at like mopping up play sometimes and reading situations. Like is quite good at that at times. So he can be a right-sided 8, lekin we need another very competent fullback, like right back, and it's a lot of change. So I don't think we are going to do that anytime soon, but it could work with his qualities. Yeah, मानस, जब क्लॉप से ये क्वेश्चन पूछा था तो क्लॉप ने बोला था व्हाई वुड यू प्ले द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड इन मिडफील्ड, और ही वाज ऑब्वियसली अल्यूडिंग टू वो गैरेथ साउथगेट, और मतलब वहां पे वो कॉन्वर्सेशन हो रहा था क्योंकि उस टाइम जब ये क्वेश्चन पूछा था तो ट्रेंट को जस्ट बुलाया था, एंड आई थिंक ही वाज लिस्टेड इन द मिडफील्ड और समथिंग लाइक दैट। देख, मैं अपना ओपिनियन इसके ऊपर दूंगा वंस यू गाइस आर डन स्पीकिंग विथ इट, बट तेरे हिसाब से तेरे को क्या लगता है? डू यू थिंक, मतलब दिस इज, ऋत्विक ने तो एक्सप्लेन किया। हाँ, मेरे हिसाब से देख, साउथगेट ने खिलाया, बट एक मैच के बाद बंद कर दिया ना वो कॉन्सेप्ट। हाँ, अगर वो इतना इफेक्टिव होता मिडफील्ड में तो साउथगेट ज्यादा खिलाता ना। तो जो मैनेजर खिलाना चाहता है वो भी एक मैच के बाद बंद कर दिया टॉपिक। सेकेंडली, जो ऋत्विक ने बोला कि जो हमारे सी लिसन, हमारे जो सिस्टम है ना उसमें साला को भी ट्रैक बैक करना पड़ता है, डियाज को भी ट्रैक बैक करना पड़ता है, एंड एवरीवन like Allison को भी sweep करना पड़ता है because of the high line. So everyone is like moving left, right and center. Whether you agree with this or not, but उस पूरे 11 प्लेयर में ट्रेंड का अवेयरनेस, जैसे ऋतिक ने बोला, is questionable. And I understand. और उसका awareness is questionable, unfortunately, in a position where you need to be very aware of things that are happening, which have resulted in goals. But to offensively देख, ट्रेंड के जो assist आते थे, balls which are whipped, you know. Like, if you take that man out of that position, put him in the center, I have not seen enough proof कि वो centrally he can play those passes. Sure, आप बोलोगे वो उधर खेला ही नहीं है तो कैसे वो दे सकता है, but अगर आप हमारे मैचेस देखो, when we are trailing, when we are going for it, Trent is everywhere. Trent बीच में भी आता है, is up top, is everywhere. तो जब वो बीच में भी आता है, और मैंने कितने लोगों के साथ मैच देखा है, लोग बोलते हैं ये इधर क्या कर रहा है। When we are trailing, when we are going for it, the first question they don't say is that, oh, Trent is there. They say ये इधर क्या कर रहा है, अरे तू और एक गोल खाएंगे। ये reality है, this is the reality. When he is there in that position, in central position, they are saying भाई ये इधर क्या कर रहा है, why is he not at his position? So what makes you think कि वो उधर आके कुछ करेगा different? I don't see any proof, and Rithwik was very correct कि भाई हमारे midfield में खेलने के लिए, do you see the hard work that Fabinho does, like Thiago did the other day against Ajax? He was everywhere. Hendo does, Milner does.
Do you expect Trent to do that? I don't, bro. In our system, I genuinely don't. That's my honest answer, bro. देख, मेरा इसके ऊपर मैं अपना बता देता हूँ. मेरा इसके ऊपर यही लगता है कि ये थियोरेटिकली ऑन पेपर कोई बोलेगा श्योर ठीक है, मेक सेंस, गोमेज को राइट बैक खिला दो. प्रॉब्लम ये है ना, अगर तुमने ट्रेंट को मिडफील्ड में डाल दिया ना, यू हैव टू चेंज रॉबर्टसन रोल, क्योंकि रॉबर्टसन और ट्रेंट साथ में खेलते हैं. बेसिकली अपना सिस्टम क्या है कि यू नो वाइड, वी ट्राई टू विन द बॉल क्लोज टू द ऑपोजिशन हाफ एंड वी ट्राई टू प्रेस. अलग अलग टैक्टिक्स है, अलग अलग ट्राई करते हैं. तो अगर तुमने ये किया कि ट्रेंट मिडफील्ड में खेल रहा है, देन यू नीड अ राइट बैक. बेसिकली तुम ट्रेंट को बोलोगे ना ड्राइव फॉरवर्ड, क्योंकि इसका गेम वही है. तो बेसिकली तुम अपने फुल बैक्स को बोलोगे डिफेंस करने में लगाओ. रॉबर्टसन का रोल चेंज करना पड़ेगा, फेबिनियो का रोल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, उसके साथ जो खेल रहा है उसका रोल चेंज करना पड़ेगा, फर्मिनो का रोल या सेंट्रली चल नूनेज जोटा जो भी है उसका रोल चेंज करना पड़ेगा, और साला और ट्रेंट ओवरलैप करते हैं उनका रोल चेंज करना पड़ेगा. बहुत बार ट्रेंट ऑल्सो विप्स क्रॉसेस टू द लेफ्ट साइड, वो चेंज करना पड़ेगा. हाउ मेनी चेंजेस? द थिंग इज दिस, इट्स नॉट थियोरेटिकली मैं समझ सकता हूं, बट प्रैक्टिकली इस चीज में इतने सारे मूविंग पार्ट्स है ना कि इट इज अ नाइटमेयर टू एग्जीक्यूट. जो मुझे लगता है पब्लिक समझ नहीं पाती है कि हमारा वी आर नॉट लाइक 11 प्लेयर्स, इट्स अ सम ऑफ पार्ट्स. You change one nut in that machine, you have to change a lot of things around. I don't think Gomez can do what Trent does. This is our system. Yeah, Rithwik, please go for it. Please go for it, Rithwik. इसके लिए I have like a very good, like very apt answer. तो आजकल, I mean, I always say this. I mean, formation as a concept is no longer very important. It's roles. In a football team or in a system, it's roles. A right back can play like in the central, like in central areas, inverted fullbacks. Wingers can play as like shadow forward. The roles change. Abhi aajkal it's not mandatory that a right midfielder has to play like on the touch plan, like on the flanks. It's not that way. So Trent is effectively playing as a midfielder for us. Attacking transitions में he is playing like that. और वो last season भी दिखा था, हेंडो वाइड जाता था, वो बीच में रन्स बना रहा है. तो और क्या चाहिए, मतलब he is effectively midfielder for us now. तो दिख रहा है ना तुमको कि he is playing as a midfielder, and that's still leaving us like short when we are like getting counter attacked. So but guys, this season already sample size बहुत छोटा है, 2 Champions League game, 6-7 Premier League game. Have we seen the best of Trent offensively? Defensively तो जाने दो. No. Offensively देखा है क्या best? Because उसका saving grace has been what he does up top, right? So Nidhi, Rithwik, no, but I don't think it is down to just Trent. Obviously he has been in horrendous form, but I think फर्क ज्यादा पड़ा है कि हमको मिडफील्ड में कोई मतलब स्टेबिलिटी ही नहीं है, उससे ज्यादा फर्क पड़ा है मेरे हिसाब से. ऋत्विक? I mean, I agree with Nidhi. Why either be, मतलब we've given away the ball very cheaply in like areas this season, or Trent is a huge risk taker with his passing. मतलब वो ऐसा pass फेंकता है and it is very risky, and that's how his game is. That's how we want him to play too. So he's lost a lot of balls, and that's led into like a lot of counter attacks क्योंकि midfield non-existent है हमारे. So, and I think he's had like issues with his form too. And against Ajax he was brilliant. मतलब वो एक goal जो which Ajax scored, and that's not entirely on him either. If you see the goal again, it's not his issue. He's covered his space actually. So he was really good in that Ajax game, and I hope that is the start of his season really. Absolutely यार, हम डेफिनेटली उम्मीद करते हैं. यार आप हमको कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक वी हैव sort of a unanimous agreement, at least हम तीनों के बीच में, कि Trent in midfield will not work, or if it works it needs too many changes, which I don't think Jurgen Klopp will do. But आप हमको comment section में बताओ if you still think it's a good idea. If you think it's a good idea, then why, what are the things that you think it needs to be adjusted around so that this works. बाकी and smash that like button if you want to see Rithwik more on our channel. Absolutely. तो ये हैंडसम फेस अगर आप अपने चैनल पे और देखना चाहते हैं तो वो लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन को बिल्कुल क्लिक करना मत भूले. और बाकी हम लिवरपूल कंटेंट लेके आते रहेंगे. चीयर्स एंड अप द रेड्स.